Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Today, I, Snehilata, welcome to an 8th year value-added course, Human Right and General Perspective. So today, 8th day of value-added course, I am highly honored and feel privileged to have been the opportunity to address an eminent speaker for today. Today, we have respected Dr. Manjur Ali, sir. He did all academic journey from famous university, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and presently he is working as an assistant professor at Giri Institute of Development Studies, Lucknow. He is going to cover the topic human right in India in Indian perspective. So, which is very important topic in a present scenario to understand what's right and what's the understanding of human right in currently in Indian situation and what the situation of human rights in India. So we are very blessed with today's lecture, and he's just a fascinating person. We are all for treat today. Without further ado, please join sir, and I welcome you in our value-added course. So it's up to you, and just welcome sir, and thank you for joining us. Yeah, thank you, everyone. First of all, I would like to thank the department for giving me this opportunity to present my view. And most of the time, when we talk about human rights issues in India, it confine most of the time into the constitutional framework or legal framework. So, but I will try to be not so boring. And and before that, I would like to put in front of you that why to study at all if one want to study human right itself. That is one question uh, comes to everyone's mind, that why human rights, why one should read that, why as a social science and humanity students should focus on the study of human rights in India, across the globe, in different political structure setup, ideological setup that rules the any nation. So I'll put forth in front of you a few figures, and to understand the gravity of the situation and the topic. Uh, According to one estimate, in 3,400 years of human history, remember 3,400 human history, only 8% have been peaceful. It means most of the time we are, if I borrow Thomas Hobbes' language, in the state of nature, despite we have a different democratization process at different stages. And if so, what is state of nature? State of nature is that human being is at war with one another for the survival. That is the bottom line one has to understand when we say that not very peaceful human evolution so far. It's just 8% of the period, total period, that we have been, relatively peaceful. Just look at the 20th century. And if you look at the 20th century, according to Margaret Drabble, in 2003, the New York Times, he has written and argued that this 20th century as a beastly century. Why he has said so? That beastly century, 20th century. According to him, 108 million population died due to war in 20th century. You know, but the figure was contested, not other than by the great historian Eric Hobsbawm. And he said that this is a very low figure to look at. And he gave, in 1994, he found that 187 million people, approximately 19 crore people, were killed or allowed to die by the human decision. Now, this is important addition by the Eric Hobsbawm, the great historian, who said that by the human decision, approximately 19 crore of population died in 20th century.
In a further study by the Milton Lackberg in 2006, there has been further, spike in the total death, and he said that approximately 23 crore population died due to war and conflict, and that too by the human disease. Now one can understand that so much of death, so much of war, so much of aggressiveness by the one human against the other, by one nation against the other, and that is happening when we were already experienced in the developed country. The first phase of democratic process was already completed, and then we are having approximately 23 crore population is dying due to war and conflict. So so if you look at all these things, to study human right perspective, what it gives you to understand the ways through which such assault on human have been taken place on human existence. So you have to look at the means, medium, and the processes through which this war and conflict and the human decision has taken place to take war and conflict situation. And if you will amaze to find that there has been variation in the understanding of this assault and the means of the assault on the population. So what is human right then? And there has been different interpretation of the meaning, of the way, of the aim of the assaults. Hence, we must reflect on the definition, origin, and evolution of the concept, which is varied in a varied way. Now, while talking in the context of the nation, each nation across the globe claims that ancientality. This is my concept. I have, I'm coining this word. It's called ancientality. किसी भी चीज की प्राचीनता को जो है दर्शाना, और हर देश के अंदर, हर राज्य के अंदर ये एक लालसा रही है कि प्रोग्रेसिवनेस को या कोई भी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है टू लोकेट इन इट इनटू देयर पास्ट. That's what I call ancientality. And it's a deep rooted in the society, and people say that it's a pre-modern concept. And if you look at the human right concept, from the European perspective, you'll find that there have been traces of human right in Aristotle writings during the Athens and Greek period. Thomas Aquinas is another figure on the verge of ancient and medieval period, whose writing has really influenced the understanding of human right. If you are coming closer to the modern period, Thomas Hobbes, John Locke, there are proponents of the human right concept. In fact, one very famous concept of life, right to life, liberty, and property was given by John Locke, and that was the foundation of liberalism in the first world, as we can say that. For longer time, natural rights, what we term as today human rights, has been discussed in the garb of natural rights. Natural rights were treated as immutable, which can't even be taken away by the infinite power of the God. So the natural rights is basically what it's through to us to understand is that the idea promoted that the man is endowed with by birth certain inalienable rights which cannot be taken by any authority, any power, whether it is a divine or it is a worldly power. So natural rights.
And one should look at into the Indian context. When we look at the European context of ancientality of this concept, look at the Indian concept of human right and its ancientality. Now you'll find in Upanishad, in the many of Dharma Shastra, the concept of nyaya, through judiciary, through different institutions, that kingdom is bound to give nyaya to its citizen, and whoever comes to the darbar of the king. So the concept of nyaya, the concept of justice, was very much it's an undeniable fact that it was in the ancient India. It was very much present over there. If the most famous book one can look at uh, to understand this concept is Kautilya Arthashastra. It is a it is a treaty. If you want to look at the Kautilya Arthashastra, it is a treaty of governance in a monarchical polity where king and the individual were governed by dharma. No one can, mind it. Dharma Shastra and the Kautilya Arthashastra is saying that no one can supersede the dharma. And dharma, what is dharma for citizen or the king? Is to protect and give the justice to the people. And in fact, it has been very well contextualized by Amartya Sen in Argumentative India in 2005. And he very rightfully said that the trait of discussion and debating culture in other word you can say that when you are debating, when you are discussion part of the, so there is a lack of a violence to enforce one's view. It means there were tolerance, there were accommodation to the idea, there was synergy of the ideas, and there was synthesis of the ideas, that there was a condition very much present in the ancient and in the medieval period. And Amrit Sen is very beautifully arguing that how those understanding, how those churning, how those traits present in the ancient society of India, affected the foundation of the Indian democracy. So it's really important to understand what Kautilya Arthashastra, what Amartya Sen and other people are saying, where other Dhamshastra, if you reinterpret, you'll find that lots of this discussion and debate culture over there. It means the lack of violence and accommodation, and which has been the foundation of the human right concept and of course Indian democracy. However, if you look at the concept of ancientality of this concept of human right, of course you'll find it's not going without challenge. There has been debates and discussion around this ancientality of the concept, and scholars like Jack Donnell argue that, and I quote Jack Donnell, professor: not all cultures have conception of human right. He's very clear about that. He's contesting the whole idea of ancientality of the concept human right. He said that it is a modern construct. Why he's saying that, we'll come to that, and try to understand why he's saying that it's a modern construct in the context of India. Because essentially, according to the Professor Donnell, the human right is the principle that, and now one can underline, I would like to underline this definition, what professor is giving. Each person has an inherent dignity and worth that arises simply from being a human. So if you are a human, there is an inherent dignity, and the worthiness is involved into the concept of the human right, which makes it modern concept.
Somewhat, if you look at the Sudipta Kaviraj in Enchantment, there is a one book written by him, The Enchantment of Indian Democracy. And he is coming closer to Professor John Donnelly. He is arguing that, and in the context of looking at the freedom presence of concept of freedom in the ancient India, and he found that, and I quote, there could be no prefiguration of modern conception of freedom in a society based on hereditary hierarchy. This is what Sudipta Kaviraj has to say. Now, given the context of ancientality and its challenge put up by the Western scholar to the European themselves, talking about the ancientality. Now look at the evolution of the concept itself, and this debate has been going on, and it's really uh, you know this debate between ancientality and it is a modern concept has been going on. But if you look at the evolution of the concept and in the Western concept and what India has adopted as a human right in the current form, which we'll discuss in a moment, you'll find that has an imprint of Magna Carta in England 1250, the Bill of Rights 1689, Thomas Paine's Right of Man in 1789, and of course John Locke's idea of right to life, liberty, and poverty. Of course, you have to add Voltaire into that. Of course, you have to look into the James Mill idea. And if I would like to summarize for my audience right now, what were the, I mean, if you look at the Magna Carta to the James Mill and what they're essentially talking about, and it become the crux, it become the essence of human right in the Indian context also. And this essence, when a government takes action without the consent of its people, it is within their right to change or abolish it. This is the first thing, if you look into the summary of that. Second essence, all free man has the right to justice and a fair trial. It restricts the arbitrary power of the monarch or the ruler or the government by the parliament. This is interesting. Next, in the line of the if you describe what the characteristic of the human right, defense of right to speak of an individual, even though one I or other people may not agree with him or her. I may speak something which somebody don't like it, but other fellow defend the right to speak itself is the essence of becoming a human right in the modern form. And of course, even if the whole world is against a particular idea, a particular individual has a right to speak. So this is summary and the characteristic of as in essence of what becoming of human rights. Now coming back to the human rights in India, it's really important to understand that human right India did shape while interacting with the colonial power. I must and everyone should agree with that, and hence bring the the concept of modernity, what was envisioned, practice in the first world, and when that first world coming in the form of colonial power in India, the Indians are interacting with them, and through those interaction, we found that the basis of human right that we adopted in India. British brought the powerful idea of liberalism and the human right to the colonial subject through the English language. I would like to give one and very important example in right now the current context is Jyotiba Phule reading of
Rights of Men, written by Thomas Paine in 1789. And it's not the one and only one. There have been many. You can go back to Radharam Mohan Roy when he is interacting with the Western world. Then Iswachar Vidyasagar interacting with the Western world and looking at the Indian side of understanding of the structure of society based on the Indian spirituality, at the same time borrowing certain idea from the Western liberalism. For example, Swaraj is our birthright. It's an Indianized form of understanding of assertion of human rights against the colonial power. Of course, one should mention about Gandhi was getting influenced by Henry Thoreau, civil disobedience movement, by the John Ruskin, Leo Tolstoy. They were the basic influencer on the mind of Gandhi. It all culminates, this whole idea of interaction with the Britisher and the fighting for the freedom of our country and nation. We all culminated, the whole idea is culminated into a single document, what we call Constitution of India. Now it's a very fantastic document. Of course, no one can deny that. The Constitution very impressively guarantee the fundamental rights, which covers wide range of civil, political, cultural, economic, and social rights. These rights were subject to certain exceptions, as we'll see in what context, just in a few moments. So these rights are subject to certain exceptions that do not render them illusionary. It's very much real that human rights enshrined in the Constitution of India in the form of fundamental rights is very much real, and we have evolved since 1947 or the adoption of Constitution 1949 till date. Fundamental rights, the most important part. And when I was talking about the essence of human rights debate, uh, theoretical understanding, and trying to figure out the characteristics of it, look at the fundamental right, chapter 3, clause 2 of article 13, and what it said, and I would like to read it. The states shall not make any laws which takes away or abridge the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of contravention. Now, I think this is this whole essence, the gist of the whole argument is coming, boiling down in the Constitution, Article 13, Clause 2. So, and you can go on Article 14, equality before laws, prohibition of discrimination in Article 15. But the most important article one should discuss in terms of fundamental rights or human rights concept is the Article 19, which discuss about right to freedom. And Clause 1, it's talk about freedom of speech and expression, assembly peacefully and without harm, to form association or union, move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory, to practice any profession, or to carry on any occupation, trade, or business. Now, in the whole concept, we were discussing that what is the most important, the base of human rights concept. It's a right to life. जिंदगी नहीं है तो फिर राइट्स का क्या करेंगे? And our Indian Constitution, which is foundation of direction of the governance to the Indian government, and direction to the how the political behavior of each agent in this polity will with the boundary, how they are going to behave or interact with each other, how their interface are going to be.
it is very much, coming to the Article 21. It's right to life. Everyone knows that. But we have evolved the Supreme Court through different judgment, evolved this right to life into many things, and it expanded and brought into many concepts. In fact, right to education become part of the right to life. In fact, your environmental, clean environment is becoming a part of your right to life. So there are expansion of this right to life. I'll give you few examples how Supreme Court judgment has evolved this particular article, Article 21, and the foundation of human rights, the right to life. The Francis Coralic Mullin versus the Administration, 1981. Justice P. Bhagwati has said that about what he said about Article 21. And he said, Article 21 embodies a constitutional value of supreme importance in a democratic society. Further, Justice Iyer characterized Article 21 as the procedural Magna Carta protective of life and liberty. Remember, I talked about Magna Carta that taken place in 1215. In Kharak Singh versus State of Uttar Pradesh and Menka Gandhi versus Union of India, you'll see that addition to the right to life. And in this judgment, dignity, life with dignity was added to the right to life. So अगर जिंदा है तो ठीक है, बट अगर डिग्निटी नहीं है, मान सम्मान नहीं है, तो उस जीवन का क्या फर्क होगा, वो सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व करता है इस पूरे आइडिया को, जो ह्यूमन राइट्स का आइडिया को, कि सिर्फ जीवन नहीं, सम्मान पूर्वक जीवन, the life with dignity to all the citizens of this country, and not only the citizen of country, every person who is residing in the territory of India or Union. Further, Chandra Raja Kumar versus Police Commissioner Hyderabad added the word decency to the right to life. Visakha case for state of Rajasthan versus the state of Rajasthan. What it added, and it's really important in the context of human right and right to life concept, it added the provision against the sexual harassment at the workplace. The most important part of, I think, right to life is the sexual harassment at the workplace of the women by the, by the colleagues, and it prohibits. However, I mean, these are the very good example. We know that by heart that Indian Constitution has performed really well. It has evolved over the time, and with the help of Supreme Court and other party into this democratic polity. But one must look at critically to the human right concept in India as well. One should have a critical scrutiny about what is happening to the human right concepts. And a little bit of criticality needed to balance, not only the balance for the sake of balance, criticism for the sake of criticism, but it has to be constructive criticism to help to evolve and give and helpful in the life of the Indian citizens. So one must look at the critical. And government, this is my statement after reading on human rights in India, and what I have found is, I would like to share before to you all. Government working under the shadow of these articles, as I mentioned previously, Article 14, 15, 13, Clause 2, 16, 17, 18, 19, 21. Government working under the shadow of these articles, constitutional safeguards, uses their flaws or generate flaws into those articles to
to generate powerful authority for what? To inhuman accesses to its own citizens. That has been there has been examples. I will come to that. There has been history of massive human rights violation in India, and it has nothing to do with any political party or any particular type of ideology running into the system. In fact, it has been very thorough since 1947 or 1949, since the adoption of the constitution. And what KG Kannabaran in 2004 book, The Wages of Impunity, he said, the interplay of violence and power has no connection with types of government and their ideology. He's talking in the context of critically evaluating the human right and its implementation in our country. So if there is an interplay of the violence and power has no connection with the type of government, so how that is happening, one must understand the procedure. Under every progressive law that I talked about, a lot of exception added to that. Most of the part, you'll find that that has been very progressive. For example, removal of untouchability from this country. So the state has this power to intervene into the society for public order, security, and for the health reason. It can intervene in the social practices and other things. So there has been a progressive intervention by the state, by the judiciary, what we today knew it as a judicial activism. But it has its own limitation as well. And look at this. For instance, it's Article 19 added clause. Now you remember Article 19, which it talks about right to freedom of different kind, association, moving from one part of the territory to another part, and assemble and all that, protest without taking up arms and all that. It add in clause 2 with the exception to put restriction on the exercise of right conferred by the said subclause in the interest of, and you remember, the sovereign and the integrity of India, the security of the state, friendly relation with the foreign state, public order, decency or morality, or in relationship to contempt of court, defamation or incitement to an offense. It's a huge exception to Article 19. Similarly, you find in Article 21 there are Sorry for interruption. There is some technical issue. We'll connect it, please. Stay connected. We're waiting for sir. Maybe 2 minutes.
Hello, hello, Yes, sir. hello. Sir, continue. Yes, sir. Oh, sorry, I think there was some technical problem into that. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sorry for that. So I was talking about, lots of exception added to the even Article 21, which is talking about right to life and accountability. So what it does actually, the exception actually overlook the accountability part from the implementing agency. Someone has to be accountable for each and every action, but this exception gives impunity, or say that take them out of accountability debate itself. So a state on many of the counts not are not accountable to anyone for its action, and day by day these exceptions are increasing. So what are the I was looking at the theoretical context of this exception, and what has been this so-called build up by the state. What are the basically argument by given by the state to say that we want those exceptions? And the most important argument put forward by the different agencies, or in a cumulative sense the state, is internal and external threat to the state itself. Maybe political instability due to the opposition political party's role and all that. Hence, it justifies that all powerful state, through the law itself, which subsides many human rights and accountability of the states. So I will give you one figure to that. Between 2001 and 2020, 1,888 custodial deaths reported by the National Crime Record Bureau's Annual Crime in India (CII) report. So one can say that it's a very nominal number. We are in almost 140 crore people, and looking at the time frame of 20 years, that approximately 1,900 custodial deaths is nothing. However, this is just a reported matter. One must understand. Apart from that, to look at that, it's even state or government is very much aware of this kind of abuses, and hence it is also evolving and bringing up check and balances in the system. And one such check and balances one can understand is the Protection of Human Rights Act in 1993. It provided the ground for formation of NHRC and its state counterpart. Section 18 of the Protection of Human Rights Act empowered the Human Rights Commission to recommend to the concerned government to grant compensations to the victim, to initiate persecution against the erring state authority, to grant interim relief, and to take various other steps. The key questions revolve around the meaning of the word recommended. So there have been, many ifs and buts around this whole, Section 18 clause associated with the Act, Human Rights Act, 1993. And critics have been arguing that the NHRC or its state counterpart has no power to take actions against the erring state authority. And NHRC and other people, other agencies, such agency in the state needed a biting teeth, sort of, to punish the culprit if there are any people. So, failure to protect the human right is failure to realize the democracy itself. So, human right has become one marker of the functioning of democracy, health of the democracy, status of the democracy itself across the globe. So now looking at the another
uh, uh, renowned Professor Larry Diamond, whose work on democracy, he has been tracing democracy for a while. He's a professor uh, of scholar of democracy, and he studied. His argument is that since 2006, democracy is in recession around the world due to the rise of neo-patrimonialism. Now, what is this concept actually? When I dig further, what is this neo-patrimonialism? It means that leaders of the democratic country itself who think that they can get away with the rule of law and transparency. So, Larry Diamond is making a very important marker to the democracy is rule of law and transparency to understand the status of or state of democracy across the world. However, this is not the only challenge, the recession of democracy across the globe. In fact, whole of the world is facing another challenge, and one has to understand that and how. If you look at the idea of Washington consensus, it's basically structure adjustment, uh, uh, you know, structural adjustment caused by put up conditionality put up by the IMF and World Bank to the developing countries, basically while giving the loans. And there has been consensus that economic reform, opening of the market is essential to the development and so that the democracy itself. Now, is there any relationship with the new liberalism, economic reform, what we call LPG, liberalization, privatization, and globalization, to the human right? That is, important to delve upon by the students. And I would like to, basically give food for thought for my audience to understand that is it really that neoliberalism is promoting, human right issue? You know, look at the what it is mean by the neoliberalism and challenge to the human right. And we found that giving more space to the market and withdrawal of the state from the welfare, general welfare role. There has been, practice of still practicing of targeted, welfare schemes to the poor population. But I am talking about general welfare role of the state has been withdrawn. There is a withdrawal syndrome in the state and giving more and more space to the market. Now, it's very interesting study in 2021. One can look at Keen and Chaudhary, and the book is To Kill a Democracy, where very interestingly they are talking about two idea of killing a democracy and two format of killing a democracy. One is the slow motion politics, and one is sudden demise theory. Sudden demise theory is suppose that like in Ukraine there was a democracy going on and someone attacked that country, and that whole structure is getting demised. The democratic structure is getting compromised due to those external threat or attack. So that is sudden demise theory. However, in the whole book they were talking about slow motion politics in a very slow motion policy level, at the law level. uh, you create certain situation which condition the violation of human rights and right to life with dignity, with decency, get compromised. They were talking about social emergency, rising of social emergency in the India, and how it compromised the education sector, health sector, basic amenity, and social security of the common people in this country.
and it's a clear cut, related with the concept of a human right. Now, another book, another author, and very interesting, making a point, Pankaj Misra, in 2017, Age of Anger, where he's talking about, there were other people who were talking about the positive effect of the globalization, and more people talking about the globalization's negative effect. And recently you can look at the Oxfam inequality report, Thomas Piketty's books, and the work on inequality, rise of inequality, concentration of wealth by Thomas Piketty. So there are many books talking about, but Pankaj Misra is talking about anger of ages of anger. And there he's saying, globalization promised a universal homogenized human race, but world has failed to realize it. Inequality created by globalization is threat to liberal principle of liberty. Now see the linkage of human right. If liberty is compromised, if liberty itself is getting compromised, if equality is getting compromised, if you are a student of social science, you'll understand the linkage between liberty, and without equality there is a no concept of liberty. So if there is no equality, there is no mean of liberty itself. अगर मैं आजाद हूं लेकिन बराबर नहीं हूं तो मैं गुलाम, तो आप एक गुलाम हैं, आजाद गुलाम हो सकते हैं. So this whole concept of equality is really important, and it is inbuilt in the human right concept. And if it is getting compromised by the policies and the law and the economic reform terms taken place 25 or 30 years back, is to looked upon from the perspective of human right. Now one can say that if there are so much of challenges, what we can do in the context of the human right. And I must say that, and I agree with Larry Diamond, Professor Larry Diamond, and other people, when they are saying that the rule of law must be ensured in any democratic polity across the globe. Rule of law is the basis of good governance, and India is party to the very much party to the this whole good governance model at the international level. So we cannot run away from rule of law, but one has to make sure about the rule of law, not the rule by the law. There has been very gigantic difference between rule of law and rule by law. And I'll give you one example of this whole rule of law and rule by law. Now look at the state of rule of law in India from the perspective of human right itself. And I had a table which in my PPT, but I'll just read it out what it means to you. State of rule of law in India must be analyzed. India is doing not very good. Now look at the ranking has been dwindling between 2015 to 20. In 2015, India ranked 59th among 102 countries with a score of 0.51. In the latest round of indexing in 2020, it ranked 69th among 128 countries. In the case of these are a very important point in the context of human right in the India. In case of protecting the fundamental right of its civilian, India ranked 61 in 2015, which pushed back to 84th position in 2020. Similarly, in the order and security parameter, India moved to 114th rank in 2020 from 90th position in 2015. In case of providing justice in civil and criminal matter, India is far below the world average. So you will say that I'm hoping from rule of law
should be maintained in our country, but the state of rule of law in India itself is in a very dismal position. However, that doesn't take away the merit of the rule of law itself, and we must you know uh, you know uh, promote, argue for, advocacy for the rule of law in the country. Now, these were the few points which I wanted to share with you in the context of human right in India and the theoretical position. Now, I think I'll stop here. If there are any question and answer session, I don't know, then I maybe take up in that. Thank you. Yes, sir. If there is any question and answer session you have put up there, Yes, or sir. I just see in the chat box. If any student raise a question, then I'll yeah, share with you. Otherwise, uh, uh, if any query, I'll just text you and just reply in a group, because please. the interaction is not possible because student is not there. The student is Yes, watching, okay. Yeah, and yeah, just in please. chat box there is a question, there is a doubt. Okay. So thank you. Wait for the HOD ma'am, because she want to thanking you. So wait for her. It's a little bit. So your lecture is very knowledgeable for us also, because I'm continuously listening your lecture and just gripping some वर्ड्स कि आपने जो जो चीज़ें बताई उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों को भी अपने लेक्चर में नोट करने लायक था, जो हम लोगों से किसी लेक्चर में छूट गया था. So Thank you. thank you for your valuable time and this ultimate lecture. We'll wait for HOD ma'am because she want to Uh, thanking you. yeah. Yes ma'am, it's up to you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, this is Professor Zeba Akil, and on the Yeah, yeah. behalf of the Department and Faculty of Humanities and Social Sciences, I am really thankful to you that you took time out of your busy schedule for us. And I'm really thankful that you just enlightened us not only by the thoughts of Indian thoughts, but also lot of I was also continuously listening, and I heard about the Western philosophers also about regarding the human rights perspective of human rights, and we are very lucky that we got a time from you and you enlightened us, and hope to see you soon again. And I'm really thankful to Dr. Khurshid who took time from you and he arranged this, Yeah. and Dr. Isnelata who was just coordinating, and my other team members. I'm really thankful to you, sir. Thank Looking you ma'am. forward to meet you again on offline mode also. Thank you. Thank, I'm thank you. Thank waiting. you sir. Thank you sir. Uh, Good afternoon to all of you. Here, there is a two segments of this program. First segment is completed by Dr. Manjur Ali sir, and next session is going to start and covered by the Anil Kumar Singh sir. Today, he is going to taking the topic women rights and human.
issues of human rights. So we are going to welcome Anil sir and just stay connected, and please continuously watching the lecture, because this lecture is formatted for you people only. So please keep watching and stay connected. Welcome Anil sir. ठीक है. Thank you so much, Dr. Sneha, for giving me. Okay, students. Now I am teaching you Unit Third, are the child labor rights. Previous class, I was teach you majority rights and then women rights. So that today I am teaching you child labor rights. Hello, student. I am Anil Kumar Singh, Political Science Department of Humanities and Social Sciences, Integral University. First of all, what is the meaning are the child rights? Mainly, child rights to the differentiations for the some are the child adolescents, for the some views are the this this is the relevant of Indian Constitution to the mainly provide by state and nation to the verbal and non-verbal to the further development are the children to age are the 16 to 14 years. So that these are the concept of the law mainly determines for the Indian Constitution. सो दैट मैं यहाँ पर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 21 जो है ए है, ये आपको एक कह सकते हैं कि शिक्षा के अधिकार के लिए दिया जाता है। ये शिक्षा का अधिकार जो है ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दोनों के साथ एक तरीके से पैरेलल में दिए जाते हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए, कह सकते हैं सभी बच्चों के लिए ये दिया जाता है। और ये कहीं न कहीं से ये सारे बच्चों की लागू होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजियस, किसी भी उस पे वो अगर आता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 जो है ये है प्रोविजन फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन factories. It is no child below to the age of 14 shall be employed in work for the factories. These are the very important role are the article 25 to the non-employment children to the discrimination for year. So that मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ ये जो आर्टिकल है, जिस तरीके से आर्टिकल 21 में बताया गया कि एक शिक्षा का अधिकार है, उसी तरीके से
आर्टिकल 24 में भी ये बताया गया है, ये एक कह सकते हैं एक प्रोटेक्टिबल रूप से बताया गया है कि इन बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी काम पे या किसी भी ऐसे जगह इनको काम नहीं कराना है जिससे इनके बचपन को दूर किया जा सके। मतलब इनको पैसे के लिए इसमें इसमें कोई भी इन्वॉल्व इनको नहीं करना है कि आपने काम करा इनको पैसा दिया, नहीं। इनको बताया गया है कि इस आर्टिकल से आप इनको किसी भी तरीके से इम्बॉलिश नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इनको रखा तो आपके ऊपर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से आपके ऊपर पनिशमेंट को एक दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरीके से कंटिन्यूसली आर्टिकल 39 जो है ये एक ऐसे विशेष कह सकते हैं, एक these are the very perspective for the political towards that to the article 39, it is the mention for the particular to the health and states are the workers to the related by the childhood person may be a man, women, any how to age are the children to the indicated for the year. This is the scenario. We cannot be exposed by, we cannot be forced by the income generation for the income generation for the economic necessity. We cannot getting to any person for this year. So that article 39 हमें ये बताता है कि ये एक विशेष प्रावधान को एक सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है, जिसमें वर्कर के साथ जो वर्कर काम करने वाले हो, इस वर्कर में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वे क्या जो बच्चे के रूप में हो, वो इसमें क्या हो, केवल पैसे के लिए ही काम करने के लिए इसमें नहीं दिया जा सकता। अगर किसी भी कम उम्र के बच्चे के साथ अगर हम काम लेते हैं या उसका दुरुपयोग करते हैं तो उसे ये रोकथाम करने के लिए इस आर्टिकल को एक प्रोविडेंट के रूप में इसे रखा गया है। नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी, आखिर ये राष्ट्रीय कह सकते हैं कि ये क्या है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति क्या है। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सब अपने टाइम टू टाइम टू चेंज करती रहती है अपने प्लानिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव एक्शन प्लान, मतलब कहीं ना कहीं वो चेंज करती रहती है अपने प्लान में, किस तरीके से एक वैधिक विधि के साथ चेंज करे, कह सकते हैं एक ऐसी योजनाओं के साथ चेंज करे जो एक प्रोविडेंट के साथ उसको लाए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल के लिए कि जब हम 1986 की बात करते हैं तो चाइल्ड वेलफेयर एक्ट के रूप में हम यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन उसी चाइल्ड लेबर एक्ट को 1916 में उसे एक इमोलिस के रूप में उसको लिया गया। उसके बाद फिर उसे 2007 में भी उसे एक तरीके से चेंज लाया गया। तो टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए एक कह सकते हैं प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, जो हम इस अपने इस सिनेरियो को, इस कह सकते हैं इस पॉलिसी को हम चेंज करते रहते हैं। वही पॉलिसी जो पॉलिसी हमें कहीं ना कहीं से एक चेंज के रूप में हमें दिखता है, वो चेंज चाहे वो महिलाओं के लिए दिख रहा हो, वो चेंज चाहे हमें एक माइनॉरिटीज के लिए दिख रहा हो, वो चेंज अगर करना हो तो हम चाहे किसी लेबर चाइल्ड के लिए या बच्चों के ऊपर किया जाए, किसी के ऊपर भी चेंज किया जाए, ये एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिसमें हम लोअर हाउस अपर हाउस के संग किसी भी तरीके से उसको एक फेरबदल करके हम उसे चेंज किए कर सकते हैं। सेकेंडली, फोर्थ जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द बेनिफिट आर द फैमिलीज टू द चिल्ड्रंस एंड सो दैट दीज आर द कंटिन्यूसली ऐसे बच्चों को उस लाभ के लिए कह सकते हैं कि ऐसे प्रॉफिट के लिए हम यहाँ नहीं कर सकते जो किसी योजना के संग जुड़ा हो या किसी योजना के लाभ के संग जुड़ा हो। सपोज दैट कि हमें कोई काम देना है और हम किसी बच्चे को पकड़ लें कि हमें कम पैसा दे करके करा लें, या किसी ऐसी महिला हो उसे कम करके करा दें, तो यहाँ पर भी ये प्रोविजन दिया गया है कि हम किसी भी कह सकते हैं डेवलपमेंट प्रोसीजर्स को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ उस प्रोसीजर को हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही करें
तो बेहतर होगा। जो लॉ के अकॉर्डिंग जो दिया गया है 6 से 14 वर्ष का अगर कोई है, तो हम उस पे किसी भी तरीके का वर्कलोड, किसी भी तरीके से उसके बचपना को कह सकते हैं, एडोलसेंस को हम नहीं छीनने का हमें कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कह सकते हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ हम कहीं ना कहीं से खिलवाड़ करते हैं। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रोल आर द नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसीज। लीगल लीगल प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट वर्क। अब यहाँ पे हम चिल्ड्रन एक्ट के साथ जो बताया गया है वो कैसे बताया गया है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोविजंस आर द रेगुलेशन एक्ट 1986। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि 1986 का जो प्रोविजंस आया था वो चाइल्ड लेबर एक्ट के लिए बनाया गया था। वो चाइल्ड लेबर एक्ट जो कहीं ना कहीं से 6 से 14 वर्ष, 6 to 14 ईयर के चाइल्ड के लिए यहाँ पर एक रेगुलेशन के रूप के साथ यहाँ पर बनाया गया था। वे जो कहीं ना कहीं से ऐसे काम के लिए, जो चाहे खनन का काम हो, चाहे एक कह सकते हैं कि ऐसे रोजगार परक काम हो जो उन बच्चों को नहीं करना चाहिए, उसके लिए ये प्रोविजन बनाए गए थे, ताकि ये प्रोविजन सभी को दिया जा सके और सारे स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट कराया जा सके। कि इसमें साफ साफ ये कहा गया था कि बच्चों के बचपने को हमें नहीं छीनना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर 1986 की अंडरटेकिंग को हम लोगों ने लिया। सेकेंडली, द subsequent to the amendment to the Child Labor Act, the Child Labor Provision to Regulation Amendment Rules are 2017। जैसे मैंने बताया कि कुछ प्रोविजंस को हम लोगों ने चेंज भी किया था। उस प्रोविजंस को हम लोगों ने चेंज कैसे किया था, जैसे हमने बताया कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं, कि इस गवर्नमेंट को कुछ चेंज करना चाहिए, या इस गवर्नमेंट में बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, या चाइल्डहुड जनरेशन के लिए कुछ करना चाहिए, तो टाइम टू टाइम सर्वे कराती है। उस सर्वे के साथ यहाँ पर कई चीज़ों को एक डिस्क्रिमिनेट के रूप में इसे लाती है, जो एक तरीके से एक फैमिली के साथ उसे जोड़ती है कि उस फैमिली के इनकम में कितना उसमें एक जनरेशन के साथ उसे रखते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो चाइल्ड लेबर एक्ट को 2017 में एक चेंज किया गया, उस चेंज करने के अकॉर्डिंग हमारे साथ उन बच्चों को शामिल करना था, वे बच्चे जो कहीं ना कहीं से बेघर थे, जो कहीं ना कहीं से किसी काम के लिए नहीं थे, या काम के लिए थे लेकिन उनको उस एज के साथ नहीं था। तो हमें बेघर बच्चों के लिए, या ऐसे बच्चे जो जिनके ऊपर कोई गार्जियनशिप नहीं है, या ऐसे बच्चे जिनके ऊपर ऐसे ऐसे पढ़ाई का प्रेशर हो, उनके पास इनकम नहीं है, तो उनमें भी कुछ न कुछ चेंज करने के लिए, कुछ प्रोविजंस करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंज किया। वो चेंजेस क्या थे? वो चेंजेस थे जैसे कि जब 6 से 14 वर्ष के बच्चों का आया, तो इस प्रोविजंस में रखा गया कि जो 6 से 14 वर्ष तो था ही, लेकिन इसमें 4 साल और भी जोड़ दिया गया कि ऐसे बच्चे जो बेघर हैं, जो बेसहारा हैं, ये बच्चे काम तो 14 साल से ऊपर के बच्चे काम तो कर सकते तो हैं, लेकिन ये बच्चे वे काम नहीं कर सकते जो जान जोखिम वाला हो। कह सकते जैसे खनन का काम हो गया, या कैसे बहुत इंटीरियर जगह पे काम कराना हो, या बहुत रिस्की जगह काम कराना हो, कहीं टेरिस पे काम कराना हो, ऐसे जगह पे भी रोकथाम के लिए इसको यहाँ पे लागू किया गया इस प्रोविजंस के साथ। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आज हमारे सामने जो चाइल्ड लेबर की जो चीजें दिखती हैं वो कम दिखती हैं। दिखती तो जरूर है, लेकिन अब वो कम दिखती है। तो देन द नेक्स्ट इज द आर्टिकल defined to the destination for the both general and state government the implementing for the act। जैसे मैंने बताया कि इसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की अपनी एक पार्टिसिपेशन होती है। उस पार्टिसिपेशन के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ साथ प्लानिंग को बनाते हैं, और इनके जो भी इश्यूज होते हैं वो एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ द कह सकते हैं लेबर डेवलपमेंट के साथ उसे कंसल्ट करके उसे
एक तरीके से रिजॉल्व के रूप में रखा जाता है और एक अमेंडमेंट एक्ट को बनाया जाता है। तो सब इसके इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि आ, यहाँ अमेंडमेंट एक्ट के साथ जो गवर्नमेंट पॉलिसीज जो बनाई जाती है, जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के साथ जो बनाई जाती है, वे कैसे बनाए जाते हैं, इसमें हम यहाँ बात करते हैं कि जहाँ पर किसी बच्चे को अगर कोई व्यवसाय में जोड़ना है या ऐसे व्यवसाय क्या ऐसा फंक्शनिंग सिस्टम के संग जोड़ना है जो बच्चे के साथ एक कॉन्सेप्ट में नहीं है या बच्चा उसे करना नहीं चाहता है, तो हम इसमें बताया गया है कि इस आर्टिकल में भी बताया गया कि हम जबरदस्ती किसी बच्चे से कोई भी काम नहीं करा सकते अगर वो बच्चा नहीं करना चाहता है। तो इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम उस एज के अकॉर्डिंग किसी बच्चे से काम लेते हैं तो एक तय सीमा, एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है, एक टाइम ड्यूरेशन को भी एक कह सकते हैं कि दिया गया है। वो टाइम ड्यूरेशन कैसा है, वो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे की कैपेसिटी है। वो बच्चे की कैपेसिटी क्या है, उस बच्चे की कैपेसिटी, उसका स्ट्रेंथ, उसके उसके सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग उसको किया जाएगा कि सपोज दैट कि बच्चा अगर हेल्दी है या उसके ऊपर कोई कह सकते हैं कि किसी तरीके का बोझ नहीं है या बच्चे के ऊपर कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है, तब तो हम काम कराने के लिए बोल सकते हैं वो। लेकिन कह सकते हैं कि अगर उसके ऊपर अगर हेल्थ इश्यूज हैं या मेंटल इश्यूज हैं तो हम उसे वो काम नहीं दे सकते जो जो उसे हम लेना चाहते हैं। लेकिन इसकी भी कंडीशन है कि वो बच्चे की जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, वो बच्चे की एज जो है 14 साल से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी हम उससे कोई काम ले सकते हैं। तो चाइल्ड लेबर एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडेबिलिटी होती है, जो भी प्रोडक्टिविटी होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसे आर्टिकल के साथ रेगुलेशन करने के लिए एक गवर्नमेंट को भी एक तरीके से एक स्टैंड के रूप में हम यहाँ पे रखते हैं, जो एक प्रोविजंस के साथ एक रेगुलेशन एक्ट के साथ हम उसे देखने को मिलती है। और यही रेगुलेशन एक्ट जो है एक मिनिस्ट्री के साथ उसे हम डेवलप कर सकते हैं। So that government had started to the National Child Labor Project NCLP. NCLP is the meaning of the National Child Labor Project. इस कह सकते हैं इस चाइल्ड प्रोजेक्ट के इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, एजुकेशन सिस्टम के संग जोड़ने की बात की जाती है, ऐसे सिनेरियो के संग रखने की बात की जाती है जो बच्चा अपने आप में सबके संग शामिल होने के लिए या कह सकते हैं एक रेगुलेशन एक्ट के संग उसमें लाने के लिए अपने आप को रखता है। हम उस बच्चे को ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं देते जो उसके बचपने को दूर करे या उसके वर्कलोड को डिफाइन करे। इस तरीके से हम यहाँ पर उसे रखते हैं। सपोज दैट कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि उस बच्चे को क्या क्या उसमें हम यहाँ पे दे सकते हैं, तो उस कह सकते हैं कि एक यहाँ पर सरकार जो है टाइम टू टाइम अपने आप में कुछ चेंजेस लाती है। वे चेंजेस जो हमें देखने को मिलता है एक फंड के रूप में, वो फंड कैसे होते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के साथ एक बजट के रूप में अलॉट किए जाते हैं। These are the verified to the budget or allotment to the expenditure for the scheme during to the time to time, during to the 5 year to time, or the project or the similar scenario for this year. For example, हम यहाँ लें कि कुछ हमारे पास डेटा है, वे डेटा हमें दिखते हैं कि जो हमारे पास जो एक चाइल्ड लेबर के साथ या उनके एक प्रोविजंस के साथ हमें देखने को मिलते हैं, वे प्रोविजंस हमें किस तरीके से गवर्नमेंट ने इसको रोकने के लिए कितना एक बजट लाया, उस बजट को कितने कैसे इसको एक एक्सपेंडिचर के रूप में एक इन्वॉल्व किया गया। हम यहाँ पर एक डेटा को देखते हैं जिसमें 2012-13 में 130.18 दीज आर द नंबर ऑफ द इन करोर्स के रूप में है, सीआर के रूप में हम यहाँ पे डिक्लेरेशन करते हैं, जिसमें एक्सपेंडिचर के रूप में हम देखते हैं कि 128 ही यहाँ पे हम खर्च करके एक तरीके से दिखा पाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास 2012 से लेकर के 2018 तक के सारे
हमारे मिलते हैं जो एक वर्क प्लेस वुमेन्स के लिए या उसके साथ हमें वो मिलता है, ताकि हमें उन चीज़ों के साथ जोड़ा जा सके जो एक चाइल्ड लेबर एक्ट को हम खत्म मतलब कम कर सकें, उसे एक करने वाले को पनिश्ड कर सकें, और करने वालों के साथ साथ जो इसे कह सकते हैं कि जो इसके लॉ एंड ऑर्डर के साथ मेंशन नहीं कर रहे हैं, उसके रेगुलेटरी एक्ट के साथ नहीं चल रहे हैं, उसे भी हम कहीं ना कहीं से इसको पनिशमेंट के लिए रख सकते हैं। यही चाइल्ड लेबर एक्ट को हम एक प्रोविजंस के साथ कहीं न कहीं से एक गवर्नमेंट के साथ हम यहाँ पर रखते हैं। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पर रिवीजन ऑफ द एनसीएलपी स्कीम, आखिर ये एलपीएस से एनसीएलपी स्कीम है क्या? गवर्नमेंट जो लेकर के आती है टाइम टू टाइम अपने उन कह सकते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे बेरोजगार हैं या जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं जिनके ऊपर नहीं करना चाहिए, या बच्चे जो 14 से 18 वर्ष के हैं जो कुछ न कुछ काम के रूप में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि एक स्ट्रिप अमाउंट के रूप में उनको क्या किया गया है, उन्हें बताया गया है, जिसपे एक 150 रुपए से लेकर 400 रुपए पर मंथ देने के लिए इसमें रखा गया है, ताकि उनके बचपने को छीना ना जा सके। एक तरीके से कह सकते हैं कि स्कॉलरशिप के रूप में एक ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व होकर इसमें करती है। और सेकेंडली यहाँ पर ये है कि कन्वर्जन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम्स भी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट अपने साथ लेबर एक्ट को लेकर के, या कह सकते हैं कि उस एक्ट को एक अनाउंसमेंट वेरियस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आती है, जो सोशल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को साथ जो बच्चे अपने आप को इस लेबर सिनेरियो पे रखते हैं या इस लेबर एक्ट के संग अपने आप को रखते हैं। सपोज दैट किसी की फैमिली वीकर्स है, तो क्या होगा, उसके कहीं ना कहीं से उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए, सोशल डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे ऐसे स्कीम लेकर के आती है कि उस बच्चे को इन स्कॉलरशिप के साथ, वो कौन सी स्कॉलरशिप, 150 रुपये से लेकर 400 रुपये तक की स्कॉलरशिप को साथ उनके कह सकते हैं एक एक मेंटेनेंस के रूप में, एक फैमिलियर मेंटेनेंस के रूप में उसे प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की जाती है। ताकि इसके साथ साथ आपने भी देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के साथ हमें देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन करने का, कि अगर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को रेगुलेटरी एक्ट के साथ अगर हम लेकर के आते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं से स्कूल जाएगा तो कुछ कुछ पढ़ेगा। तो यही एक गवर्नमेंट टाइम लेकर के आती है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को इसको भी स्कीम लेकर के आती है, जिस स्कीम के साथ 2019 में भी यहाँ पर एक तरीके से एक एक्ट के रूप में पास कराती है, ताकि इसे स्टेट और सेंटर के रूप में सारे स्टूडेंट को, कह सकते हैं मेनली ओपन टू ऑल के लिए एक यहाँ पे रखने की बात यहाँ पे की गई थी। इसमें एक लेबर चाइल्ड एक्ट के रूप में इसको दूर करने के लिए यहाँ पर बात की गई थी। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन चाइल्ड लेबर। सुप्रीम कोर्ट ने भी चाइल्ड लेबर पर कुछ अपने जजमेंट दिए हैं। वे जजमेंट जो कहीं ना कहीं से एक फॉलोइंग स्ट्रक्चर को देने के लिए, कंपल्सरी मूवमेंट के लिए एक कराया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन सो बी डिस्क्रिमिनेट फॉर द सर्वे फॉर द सम पीपल आर द एडोलसेंट्स इन state and central areas, so that first of all सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ सर्वे के साथ इसमें कराया कि जो भी बच्चे हों, जो भी इसमें हो, जो वर्किंग बच्चे हों, उनको किसी भी तरीके से जो वर्क करना चाहते हैं बच्चे, उनको अगर एज कम है तो आप उससे किसी भी एज पे काम नहीं दे सकते। अगर वो उसकी एज 14 से 18 वर्ष के बीच में है तो काम तो दे सकते हैं, लेकिन डेंजरस काम उसे हम नहीं दे सकते, जान के खतरे वाले काम उसको नहीं दे सकते। अगर 14 वर्ष से कम है तो उससे कोई काम हम ले ही नहीं सकते। अगर फिर भी अगर कोई संस्था है या अगर कोई
ऐसे ऐसे कमीशंस हैं या ऐसे कोई ऐसी फैमिली है या ऐसे कोई लोग हैं जो फिर भी काम कराते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और जुर्माना वसूला भी जाता है, जो जो जुर्माने के रूप में 20,000 रुपीज के साथ यहाँ पर एक यहाँ रखा गया है। अगर फिर भी नहीं होता है तो इसमें एक जेल का भी प्रावधान है। इस प्रोविजंस के साथ एक कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को भी यहाँ जोड़ा गया है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को एक एम्प्लॉयमेंट एक्ट के साथ रखा गया है, जिसमें चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्ट के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं। अब कह सकते हैं कि अगर हम किसी बच्चे से ले रहे हैं या किसी कोई बच्चा अगर अगर हम किसी बच्चे से अगर काम ले रहे हैं और चाहे प्राइवेट संस्था हो चाहे गवर्नमेंट संस्था हो, तो सबसे पहली बात कि हम उससे कोई काम of the interested on they are the crop of the 25 to 20,000 to the appropriate or the government to the child withdrawal from the work. So that we can say that these are the very subjective process. These are the very important work of the Indian government to the segment or the Indian Constitution. So these are the very useful for every child labor. So that this purpose is only the provision for the Child Adolescence Labor Act to the fund. हम इस चाइल्ड लेबर एक्ट फंड को भी कहीं ना कहीं से एक गवर्नमेंट जो है हर स्टेट्स में एक फंड के रूप में प्रोवाइड करती है और ये फंड उन बच्चों तक को पहुंचाने का काम करती है जो कहीं ना कहीं से इसमें अपने आप को जोड़े। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी बच्चे इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कुछ ऐसे और भी प्रोविजंस हैं जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताई है, जो बच्चों के आर्थिक और उस पर एक विलोपन के साथ जोड़ने की यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात हम यहाँ पर बताना ये चाहेंगे कि वे ऐसे कौन से एक्ट हैं या वे ये ऐसे कौन से कह सकते हैं गवर्नमेंट ने ऐसे एक्ट बनाए हैं जो एक चाइल्ड लेबर एक्ट को कम करने के लिए बनाए हैं। जैसे कि उन चाइल्ड एक्ट लेबर को कम करने के लिए एक आर्टिकल को भी यहाँ पर बताया गया, जो आर्टिकल हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि आर्टिकल 20, 21A and 24 very important role are the child labor act for this year. So अभी भी गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो चाइल्ड लेबर एक्ट को कम करने के लिए बनाने चाहिए। अगर हम ये देखें कि अगर गवर्नमेंट के साथ अगर हम ये पॉलिसी को लेकर के आते हैं या एक ऐसी पॉलिसी को एक सेगमेंट के साथ हम लेकर के आते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर होनी चाहिए कि एक सोशल अवेयरनेस की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले सोशल अवेयरनेस को हम एक गवर्नमेंट तो कराती ही है, हमें खुद पे भी एक सोशल अवेयरनेस के लिए भी एक कह सकते हैं कि एक सूझ होनी चाहिए। हमें एक बतानी चाहिए कि सोशल अवेयरनेस कैसे आ सकता है, कैसे हम लोगों को बता सकते हैं कि चाइल्ड लेबर को नहीं रखना है, चाइल्ड से काम नहीं कराना है। ये कहीं ना कहीं से हमारी और आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से अपने सारे एक्ट को अभी नहीं 1986 में ही लेकर के आ गई थी, लेकिन अभी भी इस पे बहुत सारे काम करने बाकी हैं। अभी भी इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे बदलाव लेकर के आने हैं
जिस एक्ट को आज भी कहीं ना कहीं से बहुत सारे चीज़ों को जोड़ने के लिए, बहुत सारे अमेंडमेंट को प्रोड्यूस करने की बात हम यहाँ पर करने चाहिए, जो कहीं ना कहीं से हमारे चाइल्ड लेबर एक्ट को प्रोटेक्शन दे सके। इसी अमेंडमेंट एक्ट में जैसे मैंने बताया कि अमेंडमेंट एक्ट 2016 भी आया, 2017 भी आया। क्यों आया? टाइम टू टाइम हमारे पास बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट आते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं जो चाइल्ड लेबर को कहीं न कहीं से प्रोविजंस के रूप में हमें चेंज करने पड़ते हैं। तो कहीं न कहीं से उसमें आर्टिकल के रूप में चेंज करने पड़ते हैं। वे आर्टिकल ऐसे नहीं बनाए जाते, वे आर्टिकल कहीं न कहीं से एक सर्वे के साथ बनाए जाते हैं। एक सर्वे को इंट्रोड्यूस करके बनाए जाते हैं। कुछ ये भी कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट करती है उसको एक पॉलिसी के साथ सारे सारे कह सकते हैं उस पॉलिसी को एक फ़ैमिलियर स्ट्रक्चर के साथ बनाने की कोशिश करती है, ताकि सारे बच्चों तक इसके सारे कह सकते हैं उस एडोलसेंस चाइल्ड तक वो सारे एक्ट को एक इमीडिएट फॉलो किया जा सके। वो इमीडिएट फॉलो हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम सोशल प्लेटफॉर्म पे, जब हम इकोनॉमिकली प्लेटफॉर्म पे, जब हम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे हम उसको एक यूज टू के रूप में हम उसे रखें। और यो यूज टू तभी हो सकता है जब हम उसको एक स्ट्रक्चर के रूप के प्लेटफॉर्म में लें। हम पॉलिटिकल एनालिसिस करने के बाद भी, हम पॉलिटिकल एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद भी हम ऐसे प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर पाते जो गवर्नमेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में यहाँ पर बना करके रखा है। उस उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो कहीं न कहीं से के सारे प्रोविजंस को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, चाहे वो वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के लिए हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर एक्ट के लिए हो। फर्स्टली वी कैन से दैट the overall the segment or the scenario, these are the purpose to the child labor act to the social platform, and economical platform with the issues are the in here। तो हम यहाँ पर सोशल प्लेटफॉर्म और इसके प्लेटफॉर्म के साथ ही हम यहाँ पे रख सकते हैं, तभी हम प्रोविजंस को लागू कर सकते हैं। अगर हम लोग लागू नहीं कर सकते तो शायद सारे टाइम टू टाइम सारे अमेंडमेंट को फिर से चेंज और भी किए जाएंगे, और भी उस बदलाव किए जाएंगे। लेकिन ये बदलाव कहीं न कहीं से हमारे और आपके साथ ही जुड़ने के साथ ही होंगे। अगर हम और आप इस बदलाव के संग जुड़ते हैं, तभी हम इसको हम एक तरीके से एक प्रोविजंस के साथ रोक सकते हैं। हो सकता है जो भी प्रोविजंस आए या जो भी अमेंडमेंट आए उसमें भी चेंज करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन कोशिश करने के लिए हमें सबसे पहले सामाजिक रूप से एक सोशल सोशल इन्वायरमेंट को पूरा करना होगा। सोशल इन्वायरमेंट के साथ अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इसमें कितनी भी चेंजेस ला दें, कितनी भी इसमें अमेंडमेंट को बना दें, कहीं न कहीं से इसको जो जनरेशन गैप है या एक जनरलाइज सिस्टम के साथ है, हम उसी उसी सिस्टम के संग भी इन्वॉल्व बच्चों को देखते ही रहेंगे, जो सिस्टम हमारे संग यहाँ पर चला आ रहा है। आज भी चाय की दुकानों पे, आज भी किसी न किसी ऐसे फैक्ट्रीज में हम देखते हैं जो एक नॉन गवर्नमेंट अथॉराइज के रूप में रहती है, या हम कहीं भी देखते हैं अपने आसपास, वहाँ पे हमें तमाम बच्चे मिलते हैं काम करते हुए, और हम अक्सर भी पूछते हैं कि क्या आप स्कूल जाते हैं? वो बोलते हैं कि हाँ, कभी कभी चले जाते हैं। तो ये ऐसा सिस्टम क्यों आ रहा है? गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ हमें भी इस गवर्नमेंट के प्रोग्राम को, इस गवर्नमेंट की सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि इस चाइल्ड लेबर एक्ट के साथ या चाइल्ड लेबर के प्रोसीजर को कहीं न कहीं से उन बच्चों तक दूर रखा जाए जो जो बच्चे कहीं न कहीं से एक एडोलसेंस के रूप में है, एक कह सकते हैं अपने बचपन के साथ हैं, उन बचपन के साथ ही अपने आप को रखें। तो इसी के साथ ये I have this article was very helpful to you, and these are the and thank you so much, student. Thank you so much, student, and God bless you, student. Thank you for all.